So we have started with operational amplifier. So which is this IC? Analog or digital? Analog IC. Analog IC. The number is IC741, right? And Yes, sir. basically we have seen that the operational amplifier, it consists of 3 terminals, right? So we have seen an operational amplifier. This is the symbol of the operational amplifier. So how many inputs are there? 2 inputs. Two inputs. Inverting, another is non-inverting. Non. And how many outputs are there? One One output. output. Only one. And then what is this thing? 2 are the power supplies, right? So Yes, sir. yes. So let me call it as this is your plus VCC. This is your minus VCC. This is your V2. This is your V1. What is applied? What is going at the input? VD, D. right? Let us say A D is nothing but the gain of the amplifier, and this is your V naught, right? We can express V naught as AD times VD, correct? So this Yes, was sir. your amplifier. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let me just keep it aside. Okay. So this is your operational amplifier. Now, all of you just see that this is your operational amplifier. Okay. Now, let me take some another color and let me draw the input resistance, right? So we are into now, we will just see something, right? Now, let me just give you something. Let me rub this thing, okay? Now, if I want to draw the input resistance is always between the two internal or input points, right? So let me draw it. So can I say that this is your resistance and this I will call it as Ri. What is this Ri? Input resistance. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us say that I am applying some voltage here. So what I am saying that ये जो पूरा का पूरा इनपुट रेजिस्ट, ये जो पूरा वोल्टेज है वो कहाँ पर जाना चाहिए? इनपुट में जाना चाहिए. पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो एम्पलीफायर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर. जाना चाहिए मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूरा का पूरा होना चाहिए. तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ज्यादा चाहिए. Right? So ideally the value of input resistance should be as high as possible. How should be the value? As high as possible. Okay, so ideally the value should be infinite, right? Infinite. Yeah. Okay, so we have seen the characteristics of your common emitter amplifier. उसमें भी एक था कि the main advantage of common emitter amplifier is its input resistance is very high, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, this is regarding input resistance. Now let me tell you, if I want to draw some equivalent circuit, right, then here there will be some voltage drop, right? Here there will be some voltage drop, right? And this is between this point and ground, right? And this voltage drop, I can call it as, this is nothing but AD times VD. Correct? बराबर है ना? Okay, and then this voltage will get out from the input and it will go to the output terminal. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है? आपके एम्पलीफायर के अंदर हो रहा है एम्पलीफिकेशन, एंड हाउ मच इज द वोल्टेज यू आर गेटिंग एट इन द एम्पलीफायर? AD टाइम्स VD. एम्पलीफिकेशन होने के बाद में आपको AD टाइम्स VD मिलता है, राइट? सो V नॉट आपको कितना चाहिए? पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट में. यस, नो?
Yes. Yes, sir. Output resistance is always connected in parallel series, right? And this I will call it as R naught, right? तो अभी देखिए यहाँ पर 100 volts है, right? Suppose this is your 100 volts, right? So अगर यहाँ पर 1 volt ड्रॉप होता है, यहाँ पर 1 volt ड्रॉप होता है, तो आउटपुट में कितना आएगा? 99 volts. 99. तो R naught कैसा चाहिए? वेरी हाई और वेरी लेस? Very less. Very less. Very less. आइडियली इसका वैल्यू कितना चाहिए? 0 ohms. आइडियली इसका वैल्यू कितना चाहिए? इनफाइनाइट ohms. Getting? Yes, sir. Yes, sir. So output resistance is always connected in series with the output, and the ideal value of output resistance is 0. ये समझ में आ रहा है? दो बातें समझ में आ गई आपके? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी अभी फिर से एक बात बताता हूँ मैं आपको. ओके, लेट अस सपोज ये थोड़ा सा इन डिस्क्रिप्शन देता हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या चालू करना है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी सीइंग अबाउट द पैरामीटर्स, वी विल सी अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट? सो वी विल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट्स, राइट? और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है. लेट अस सपोज यहाँ पर दे दिया +15 वोल्ट्स, तो यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे -15 वोल्ट्स, राइट? एम्पलीट्यूड सेम, चेंज इन डायरेक्शन. ओके, तो +15 -15 दे दिया है. यस, नो? Yes, sir. Yes. ओके, अभी इनपुट में कुछ सिग्नल दिया है? नहीं सर. No, sir. नहीं दिया है. No, sir. मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, V1 कितना है? 0. V2 कितना है? 0. तो V1 - V2 कितना होगा? 0 वोल्ट्स. 0. तो आउटपुट में आइडियली कितना आना चाहिए वोल्टेज? 0. 0, राइट? लेकिन अगर आप मल्टीमीटर जाके लगाओगे आउटपुट में और देखेंगे हाउ मच इज द वोल्टेज, मल्टीमीटर का रीडिंग, तो वो आएगा लेट अस सपोज 5 मिलीवोल्ट. ओके, तो ये 5 मिलीवोल्ट जो है ना, ये आपको चाहिए नहीं चाहिए? एम ऑडिबल? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. 5 मिलीवोल्ट अगर मैंने प्रैक्टिकली चेक किया ना, तो आउटपुट में 5 मिलीवोल्ट आ रहा है. वो चाहिए हमें या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? नहीं चाहिए. बिकॉज दिस इज अ नॉइज. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने आपका स्पीकर चालू किया है, नहीं तो माइक सिस्टम चालू किया है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर भी माइक में स्पीकर में से ऐसा आवाज आता है करके, राइट? Yes, sir. So Yes, that sir. is this noise, 5 millivolts, right? और ये किसके वजह से आता है? This is due to the application of the power supply. बराबर है? If I am not giving input, सिर्फ आपका स्पीकर का बटन चालू किया तो थोड़ा सा आवाज आता है, right? So that is this voltage. So this voltage I will call it as offset voltage. Offset voltage क्या बोलेंगे इसको? Offset voltage. Offset voltage. अभी देखिए हाँ, इसका डेफिनेशन, विदाउट गिविंग एनी इनपुट आई एम गेटिंग आउटपुट, so that voltage is called as your offset voltage, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Offset voltage is due to the application of the power supply, correct? Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सिंपल है. ओके. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us deal with some of the terminologies, right, of operational amplifier. Okay. Now सबसे पहला आपका टर्मिनोलॉजी आएगा that is your input resistance, right? So इसको डिनोट करेंगे हम RI से. ओके, सो RI का वैल्यू, राइट, मैं पहले आइडियली लिखूंगा. वैल्यू कितना चाहिए आइडियली? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RI आइडियली? Infinity. Infinite. Okay, so RI should be infinite ideally, right? इसका प्रैक्टिकल वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिखूंगा. प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ IC 741 is 1 gigahertz, correct? ओके, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है. कौन सा वैल्यू है? Practical. Practical. ओके, नाउ so सुनिए, resistance measured between the two input terminals is called as your input resistance, right? Now all the applied voltage at the two input terminals should go inside the operational amplifier, right?
That is, the voltage should get drop across the input resistance. Hence, the value of input resistance should be infinite. Practically, it is 1 gigahertz. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So we have started with parameters of operational amplifier, right? Now let us deal with second parameter. Second parameter is what? So this I can call it as infinite input resistance, right? So दूसरा क्या होगा आपका? Zero output resistance, correct? So R नॉट का वैल्यू क्या आना चाहिए? Zero. 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 ओके, देखिए ये आइडियल वैल्यू है. प्रैक्टिकल वैल्यू अगर आपने चेक किया तो ये आएगा 75 ओम्स. दिस इज फॉर आईसी 741. ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं. ओके, करेक्ट? यस, नो? Yes, sir. ओके ओके. Yeah. नाउ थर्ड देखिए, हाँ, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, राइट? ओके, सो व्हाट शुड बी द वोल्टेज गेन? एडी क्या होना चाहिए? एडी इज व्हाट? वी नॉट अपॉन Not upon V. V, right? और V नॉट अपॉन VD, करेक्ट? राइट? ओके, सुनिए यहाँ पर AD कितना आना चाहिए? आइडियली इनफाइनाइट. प्रैक्टिकली इसका वैल्यू रहता है 2 into 10 to the power 5. यूनिट्स होंगे इसको? नहीं, क्यों? रेशियो है. यस, नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं ना, थोड़ा सा इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, right? So infinite, ideally it should be infinite. Practically it is 2 into 10 raised to 5. Okay, any problem in this? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. 4. Offset voltage, right? Okay, so offset voltage is what? When V1 is equal to V2 is equal to 0. बराबर है? When V1 is equal to V2 is equal to 0, तो VD क्या होगा आपका? 0 होगा. So therefore V नॉट क्या आना चाहिए आपका? 0. तो ऑफसेट Zero. आइडियली कितना आना चाहिए? Zero. 0, पूछ रहा. राइट? हाँ, पूछ रहा. प्रैक्टिकली इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू रहेगा फ्यू मिली वोल्ट्स. पूछ. इसका और मिल्टन नो. मिथ म्यूट कर दो आप. ओके, ग्रेट. सो यस, so where I am now? Okay, so what is the definition of offset voltage? Whenever there is no input, right, still I am getting some output. That output voltage is called as offset voltage. That voltage, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. That voltage is called as your offset voltage, and that is due to the application of the power supply plus VCC and minus VCC. Practically the value of offset voltage is few millivolts. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अभी देखिए, हाँ, नेक्स्ट इज योर बैंडविड्थ. बैंडविड्थ मैंने क्या बताया था पिछले बार? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मींस व्हाट? Range of frequencies, right? Range of frequencies which will provide the amplification, for which the amplifier will provide the amplification. For example, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, right? और आपका आवाज अच्छे तरीके से आ रहा है, और अगर कोई दूसरा अगर आता है, right? Let us suppose a Chinese lady is coming here, right? And if she is talking, right, then of course our frequency will be difference. बराबर है? डिफरेंट रहेगा ना. मेल फ्रीक्वेंसी एंड फीमेल फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग रहता है ना. Yes, Yes, sir. okay. Yes, sir. Or if someone is Yes, speaking sir. with very higher pitch, right, then maybe the frequency is high. So ऐसा होना चाहिए क्या कि मैं बात कर रहा हूँ तो एम्पलीफायर ने अच्छे से एम्पलीफिकेशन देना चाहिए, अगर कोई दूसरा आके बात करता है तो फिर एम्पलीफिकेशन अच्छा नहीं देना चाहिए? ऐसा होता है एम्पलीफायर? No, sir. Very एम्पलीफायर ratio. No. each and every frequency, right? So bandwidth is nothing but range of frequencies over which एम्पलीफायर विल वर्क. बराबर है? तो एम्पलीफायर ने आइडियली कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए? सब All frequencies. all frequencies, right? So what should be the range of frequencies? It should be infinite, right? So it should provide infinite bandwidth, right? लेकिन practically this circuit will provide, or this amplifier will provide the amplification for the bandwidth of 1 megahertz frequency. समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, now next is your sixth.
Okay, so I'll just sixth is your CMRR, right? Common mode, right? कॉमन मोड मतलब क्या? कॉमन मोड मतलब क्या? इन दोनों को मैंने क्या किया? एक एक पावर कॉमन सप्लाई। सिग्नल, हाँ, एक कॉमन सिग्नल दे दिया, राइट? ओके, सो कॉमन सिग्नल दे दिया तो वीडी क्या वैल्यू क्या आना चाहिए? 0. जीरो। V1 बराबर है ना, जीरो आना चाहिए, राइट? कॉमन मोड में गेन क्या रहता है? कॉमन मोड में गेन क्या रहता है? एसी। 0 आएगा। कॉमन मोड हाँ, गेन yes. बराबर है। ओके, सो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 0. 0. ओके ओके, नाउ what is common mode rejection ratio? So common mode rejection ratio, right? Common mode RR is rejection ratio, right? Okay, so see, in common mode I can write that V naught is equal to AC times V in, right? And in differential mode V naught is equal to AD times V in, right? V in may be your VD, correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So common mode rejection ratio will say you the ability of operational amplifier to reject common signal. समझ में आया? देखिए, कॉमन सिग्नल क्यों हमें, हमारा कॉमन मोड जीरो चाहिए, नहीं तो क्यों हमारा कॉमन मोड गेन जीरो चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर दो टर्मिनल खुले रखे हमारे एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में भी कुछ सिग्नल्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स वगैरह होते होंगे, बराबर है? सो वो Yes. दो सिग्नल्स दोनों टर्मिनल पे जाएंगे, तो दोनों टर्मिनल पे अगर सेम सिग्नल आ रहा है तो वो रिजेक्ट करना चाहिए उसने। Yes, यस, sir. नो? Yes, Yes, sir. sir. So this is a ratio which will tell the ability of the amplifier to how much the amplifier is efficient to reject the common mode signal, right? And mathematically, common mode rejection ratio, right? Mathematically, common mode rejection ratio, CMRR, is nothing but it is a ratio of differential mode gain to common mode gain, बराबर है? सो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए आइडियली? नीचे क्या है? AC शुड बी जीरो, सो इट शुड बी Infinite. Right. इनफाइनाइट, राइट? आइडियली। प्रैक्टिकली इसका वैल्यू आता है 31622, राइट? देयर इज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो, करेक्ट? Okay, Yes, sir. Yes, and sir. if you want to calculate CMRR, right, and that too in dB decibels, then decibels में कैसे लेते हैं हम? 20 log of AD by AC, right? Log to the base 10 होता है, right? So this is in dB, okay, but this is itself is a very high value, 31,622, right? So this is the practical value. Getting? So common mode rejection ratio is the ability to reject the common signals. तो इसका काफी ज्यादा high ability है to reject the common signals. So that's why this is famous. Correct? Any Yes, problem sir. with this? No, No, sir. sir. Okay, okay. Now next one, seventh is your sleeve rate, right? Sleeve rate, right? Now see one simple example, right? If a signal is applied to the input amplifier, input of the amplifier, then output should change instantly or it should change with some time. Sir, instantly, sir. Instantly. change. बराबर है? If I am saying hello, right, और आउटपुट स्पीकर में से आवाज 1 घंटे बाद आ रहा है हेलो, तो चलेगा क्या आपको? No, sir. No, sir. Right? So slew rate is what it will tell the ability of the amplifier, how quickly it is changing, how quickly the rate of output is changing with respect to the change of rate in the input. Yes, no? Yes, sir. Right? Yes, sir. So slew rate defines the rate of change of output with respect to time. Getting? Slew rate
SR बोलते हैं. Slew rate is nothing but rate of change of output with respect to time. Rate of change मतलब d by dt. Correct? Yes, sir. इसका Yes, sir. आउटपुट का. Yes, no. Yes, sir. ये वैल्यू कैसे चाहिए? मैक्स चाहिए या मीन Yes, sir. चाहिए? Infinite. Within how much time you should get the output? 0 time. So 0 time. ideally the value of slew rate should be infinite. Yes, no? Yes, sir. Yes, Within sir. no Yes, sir. time, within no time the output should change. So slew rate ka value ideally it should be infinite. Practically it is 0.5 volts per microsecond. Right? ये यूनिट ध्यान में रखिए इसका. तो is it 0.5? Is it a very big value? Of course, No. it is very No, big sir. value. Why? Because डिनोमिनेटर में माइक्रो है, अगर ऊपर आएगा तो मेगा हो जाएगा. -6. समझ में आया? Yes, sir. वोल्ट पर माइक्रोसेकंड. ये वोल्ट ऊपर है न्यूमरेटर इसलिए वोल्ट और नीचे टाइम है इसलिए सेकंड, लेकिन मैं माइक्रोसेकंड में मेजर कर रहा हूँ. यस. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Good. Now, Yes, next is your 8 parameter is your power supply rejection ratio. Power supply rejection ratio. Right? इसको हम PSRR भी बोलते हैं. Right? What we can tell it as PSRR. Right? Okay. Now इसको मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ PSRR. ये क्या है पता है? PSRR is power supply rejection ratio. अभी एक सिंपल फंडा बताता हूँ मैं आपको कि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको मैंने आउटपुट में से पावर दे दिया प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी. राइट? Yes, sir. अभी पावर Yes, sir. 15 वोल्ट दिया है. 15.1 हुआ नहीं तो 14.9 हुआ गलती से, तो आपका आउटपुट चेंज होना चाहिए क्या? No, sir. चेंज नहीं होना No, चाहिए sir. ना. राइट? सो PSRR will specify the degree of dependence of output on the change of plus VCC and minus VCC. Getting? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. PSRR is nothing but your change in your offset voltage divided by change in your input, or you can say power supply. Right? So इसको हम बोलते हैं डेल्टा चेंज, मतलब डेल्टा. राइट? ऑफसेट वोल्टेज, कौन से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन द पावर सप्लाई. सो लेट अस से डेल्टा वी से हम डिनोट करेंगे. ओके. सो सुनिए. सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज नथिंग बट योर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. राइट? सो लेट अस कॉल इट एज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. ओके. नाउ PSRR. Okay, so PSRR, ideally the value of PSRR should be, offset voltage का value कितना चाहिए? 0. 0. So ideally the value is 0. Practically the value is 150 microvolt per volt. Right? So is it very small? Power supply rejection ratio. ये जितना कम Yes, होगा sir. उतना अच्छा है. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in this? No, sir. No, sir. Next parameter is your input bias current. Input bias current, right? How many operational amplifier are there? How many input currents are there? 2. Can I say this is I1 and I2? Right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. अभी देखिए इसके अंदर कल हमने डायग्राम देखा था. इनपुट स्टेज में क्या था? डिफरेंशियल एम्पलीफायर था. सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कौन से मोड में था? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर. Yes, sir. कौन से मोड में था? जो ट्रांजिस्टर का कल डायग्राम देखा था हमने. कॉमन एमिटर. कॉमन एमिटर में करंट कहाँ जाता है? इनपुट कहाँ जाता है? बेस में जाता है. बराबर है? Yes, sir. सो Yes, इसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, मतलब 2 ट्रांजिस्टर्स हैं. 2 ट्रांजिस्टर है तो 2 बेस है, तो एक में जाएगा करंट, एक पहले ट्रांजिस्टर के में जाएगा बेस को करंट, तो इसको मैं बोलता हूँ IB1, और दूसरे ट्रांजिस्टर में जो करंट जा रहा है बेस में उसको बोलता हूँ IB2. करेक्ट? Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Now just check it out. Okay, so
Input bias current is what? Input bias current is IB, and IB is nothing but IB1 plus IB2 divided by 2, इन दोनों का average. Yes, no? Okay? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अभी सुनिए, इसका वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर क्या है? RI आर आई. आर आई का आइडियल वैल्यू कितना होता है? infinite. तो इसको मैं Infinite. ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूं. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं. इसमें करंट जाएगा क्या? जाएगा? No, sir. No, No, sir. sir. इसमें करंट जाएगा? No, नहीं. sir. क्यों? बिकॉज ओपन सर्किट है. इन ओपन सर्किट नो करंट इज फ्लोइंग. So inside the operational amplifier there is no current, ideally, correct? अच्छा. प्रैक्टिकली Yes, अगर sir. देखा जाएगा तो इसमें कुछ करंट रहेगा, दैट विल बी इन वेरी 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 फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, राइट? सो इसका आइडियल वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो. Zero. 0. प्रैक्टिकली इसका वैल्यू आता है 50 नैनो एम्पियर्स, राइट? 50 नैनो एम्पियर्स, मिली भी नहीं, माइक्रो भी नहीं, नैनो. नैनो इज अ वेरी वेरी स्मॉल करंट, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. And then finally it is your input offset current. So this is again called as IOS, input offset current, right? And it is nothing but modulus of difference between the two currents which is flowing through the base of the transistors, right? Okay, so इनका डिफरेंस कैसा आएगा फिर? आइडियली इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? Zero. 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 Practically it is 6 nano ampere. एवरेज से कम होगा ना डिफरेंस. सो 50 से 6. यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So these are nothing but your parameters. These are nothing but your parameters. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Easy है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. Yes. Sir, please repeat input bias current, sir. Input bias current is what? सुनिए, whenever we are applying some power supply to the, okay, मैं एक काम करता हूँ. I will just open the PPT if I can. So where is the PPT? हाँ, ये है ना PPT मेरे पास. So this is our unit, right? So let me. Can you see the my screen, right? Yes, sir. So what we have covered yesterday is what is operational amplifier, and then symbol, and then we have seen the block diagram, right? And in the input stage, we can see here how many transistors are there? Two transistors. Two right? transistors. So इसमें जो करंट जा रहा है वो है आपका IB1, and इसमें जो करंट जा रहा है वो है आपका IB2, right? बराबर, इन्वर्टिंग. Yes, sir. Yes, sir. राइट. Yes, sir. ओके ओके, इसको अभी सप्लाई दिया ना मैंने, इसको प्लस वीसीसी सप्लाई दे दिया. Yes, sir. ओके, अभी देखिए प्लस वीसीसी और इसको हमने सप्लाई दिया माइनस वीई से, माइनस वीसीसी से लेटर सपोज. ओके, तो ये करंट फ्लो कब होगा? जब मैंने सप्लाई दिया उसके बाद में करंट फ्लो होना चालू होगा. Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो इनपुट बायस करंट इज व्हाट? जो करंट जा रहा है ना अंदर, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द पावर सप्लाई, there is some current which is flowing in the input terminal. That current is called as your input bias.
input current at the two terminals, and when we are taking the average of the two currents, right, that current is called as your input bias current. Yes. Okay, sir. ओके अभी देखिए हमने क्या बोला कि हम अगर आउटपुट से वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट से जो आने वाला करंट है वो ट्रांजिस्टर के अंदर जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए फिर भी कुछ करंट रहता है जो इनपुट टर्मिनल्स में मौजूद होता है दैट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पावर सप्लाई बिकॉज IB1 एंड IB2 आर फ्लोइंग करेक्ट Yes, sir. Yes, तो sir. इसलिए इसको इनपुट ऑफसेट करंट भी बोलते हैं सो टू करंट्स आर देयर बायस करंट मतलब दोनों का एवरेज ऑफसेट करंट मतलब दोनों का डिफरेंस मॉडुलस ले लिया मैंने ओके Okay, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन दिस No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. so let us see that we have seen this thing right and then this thing is over okay so these are nothing but the op amp parameters right on which parameters मतलब क्या इन सब parameters पे हम decide करेंगे ना हमारा op amp कैसा है जैसे आपको व्हीकल लेना है राइट सो व्हीकल लेंगे तो फिर हम उसके पैरामीटर सेट करेंगे उसका माइलेज क्या चाहिए उसका स्पीड क्या चाहिए उसकी सीट के पोजीशन क्या चाहिए राइट यस नो Yes. Yes, sir. Yes, sir. So this Yes, is yes. nothing but your open loop voltage gain. Open loop voltage gain मतलब क्या? Open loop मतलब क्या? Output अभी loop है क्या सर्किट में नहीं है तो loop open है. So this open loop voltage gain हमने इसको क्या बोला था? AD बोला था right? AD इनपुट रेजिस्टेंस इसको इनपुट इम्पीडेंस बोला है यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस राइट इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट बायस करंट राइट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी देखा हमने उसके बाद में फिर क्या स्लीव रेट देखा CMRR देखा SVRR देखा एंड देन गेन बैंडविड्थ देखा राइट Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बैंडविड्थ देखा राइट तो सुनिए सुनिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट should always be 1 gain into bandwidth product का product should always be 1 for a good amplification yes so gain bandwidth product सिर्फ आप देख लीजिए any problem in this No, No, sir. sir. No, sir. so let us continue our discussion right so we have seen this thing maximum output voltage input offset voltage and all that thing so just go through it once okay yeah so there is a numerical right so we can just okay so there is a numerical right so this is your the output voltage of certain operational amplifier is given like this right determine the slew rate बता सकते हो आप कैसा है इसका slew rate how much is the change in the voltage देखिए ये स्लोप निकालना है आपको स्लोप कैसे निकालेंगे y2 minus y1 so plus my 9 minus of minus 9 18 divided by how much is the difference 1 microsecond so कितना हो गया ये 18 divided by 1 microsecond 18 volt per microsecond correct yes no Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay and then we have seen this thing CMRR also we have seen so just go through it if you have any difficulty you can just tell me out right so this is your example that a certain operational amplifier has open loop differential voltage gain means what is given what is VD. this VD. VD. AD गेन दिया है ना गेन को हमने A से डिनोट किया था करेक्ट Yes, sir. Yes, Yes, sir. एंड कॉमन मोड गेन ऑफ 2 मींस क्या है ये AC व्हाट इज CMRR AD डिवाइडेड बाय AC सो ये आपका CMRR आ गया यस नो Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेसिबल्स में चाहिए तो 20 log of this value will give you 114 dB yes Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. okay good so gain bandwidth product right so this you need to by heart right it is the bandwidth of operational amplifier whenever the voltage gain is 1 right so typically we have seen the bandwidth is 1 megahertz so gain bandwidth product is what gain multiplied by the bandwidth that is frequency okay yes Yes, sir. गेन Yes, बैंडविड्थ प्रोडक्ट ओके नाउ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब वही है कि कौन से फ्रीक्वेंसी को आपका वोल्टेज गेन अच्छा रहेगा राइट सो आइडियली इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए सभी फ्रीक्वेंसीज को अपना जो गेन है वो अच्छा आना चाहिए लेकिन क्या होता है कि आफ्टर सम फ्रीक्वेंसीज द गेन विल डिक्रीज मतलब आपका आउटपुट जो है वो कम आने लगता है राइट सो दो कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट फॉलो दिस रेड लाइन राइट तो यहाँ तक आपका गेन बहुत अच्छा रहता है इसके बाद में गेन डिक्रीज होना चालू होता है ओके सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब क्या कौन से
फ्रीक्वेंसीज को आपका एम्पलीफायर कैसा आउटपुट देता है, राइट? सो दिस इज द, ये इतने सारे फ्रीक्वेंसीज तक आउटपुट आपका कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में कम होता है, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसीज कितने हैं? सो दिस फ्रीक्वेंसीज और दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट, दिस इज कॉल्ड एज योर बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ कैसे करेंगे? हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है? 10 पावर 4. to the power 4 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 1, 1. right? So this is the bandwidth, correct? Yes, sir. So gain bandwidth product, and these are nothing but the ideal values and practical value for your reference. Okay. Yes. तो मैंने Yes, जो sir. दिए हैं values वो भी सही है, ये भी सही है. I have carried it from some reference books, so you can refer that values. Okay. Okay, sir. Yeah. So this is just comparison of the parameter. Okay. And now let us turn our attention to something, a new topic. Okay. So any problem in this till now? No, sir. No, sir. No, sir. So shall we start a new topic or shall we continue tomorrow? As you wish. Continue tomorrow, sir. Tomorrow, sir. Tomorrow. Tomorrow, sir. Okay, okay, okay. So just a second, and what we will do here. So एक छोटा सा पॉइंट लेकर हम खत्म करते हैं, राइट? Now here resistance is Infinite. Infinite. right? So Ri is infinite, so this is your open circuit, right? So current is going in the operational amplifier. No. No, sir. No, sir. Okay. So when no current will flow in the 2 points, whenever, see, current will always flow from higher potential to Lower. Lower potential. तो करंट फ्लो कब नहीं होगा? जब दोनों का पोटेंशियल Equal रहे. Same Equal. equal रहेगा. right? So I can say current in the operational amplifier is 0. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब V1 और V2 इक्वल पोटेंशियल पे है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. देखिए, मैंने अगर इसको ग्राउंड को कनेक्ट किया तो V1 का वैल्यू क्या हो गया? Infinite. Infinite. 0 वोल्ट. Zero. ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट्स, राइट? ये कितना है? 0 वोल्ट्स. ओके. तो अगर V1 0 हो गया तो V2 भी 0 हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. मैंने अगर V1 को ग्राउंड को कनेक्ट किया तो इसका मतलब ये भी ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है? Indirectly. Indirect. Indirectly हो रहा है. Virtually it is getting connected to the ground, so this concept is called as virtual ground. Correct? Virtual ground concept क्या बोलता है कि current in the amplifier is always 0 and potential difference at both the terminal is same. Okay? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay, तो इसका यूज कहाँ पर करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. Okay? And then some feedbacks are there, so we will continue it in the next lecture. So any problem? Anyone? How was the lecture? समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes.